गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। जो भी स्टूडेंट पास्ट में ब्रिज कोर्स से जुड़े हुए थे उन सभी स्टूडेंट्स को बेसिक और ब्रिज कोर्स हैव बीन कंप्लीटेड। नाउ वी आर इन आवर इम्पोर्टेंट चैप्टर. This is very important chapter for entire chemistry, because without this chapter chemistry is nothing. So it is very important for you all and for me also that to study about structure of atom. So we are starting chapter number 2, structure of atom. Just see, if we have discussed about the past knowledge, अगर हम हमारी पास्ट की स्टडी थोड़ी देखें तो हमारे सामने वर्ड आ रहा है एटम. ये जो एटम वर्ड है ना, वो ग्रीक वर्ड एटोमियो के ऊपर से आ रहा है. स्टूडेंट, जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जब ये आप वीडियोस देख रहे हैं, तब मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि आप रफ बुक साथ में रखिए, पेन रखिए. जो भी मैं कुछ बोलता हूँ उसमें जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स आती है उसको नोट डाउन करने की हैबिट डाल दीजिए. इसी तरीके से हमारा लेक्चर चल रहा है कि ताकि हम क्लासरूम में बैठे हो ऐसा ही हमें लगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स विथ पेपर एंड पेन. Okay, so take your paper and pen, then write down the important points which will give by me by wordings, जो बोर्ड पर नहीं लिखा होगा, जो मैंने बोला होगा. ठीक है? ओके, तो ये जो एटम वर्ड है ये ग्रीक वर्ड एटोमियो के ऊपर से आ रहा है और उसका मतलब होता है जिसका डिवीजन नहीं होता है ऐसा. सो अनडिविजिबल इज एटम, बट इट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एटम का डिवीजन नहीं हो सकता. एटम का डिवीजन हो सकता है, इट इज पॉसिबल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द पार्ट्स ऑफ एन एटम. ये एटम के डिविजनल पार्टिकल्स ही है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. सो एटम इज नॉट और इट इज अनडिविजिबल, इट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट. ये तो ऐसे ही बोला गया था, बट जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो मालूम पड़ा कि एटम तो डिविजिबल है, ये डिवीजन हो सकता है, ऐसा है. तो ये बात वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ख्याल में रखनी है. अभी देखना है कि अगर हम ऐसा बोलते हैं कि एटम का डिवीजन हो सकता है तो एटम का डिवीजन कैसे हुआ? हाउ कैन वी नो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द पार्टिकल्स ऑफ एन एटम? सो our first question is belongs to this point, the discovery of electron. We will understand or will explain this thing, discovery of an electron. So how can we find electron? Just see, electron word is given by G.J. Stoney, and the discovery of electron is given by J.J. Thomson. But the experiment for the planning for the discovery of an electron is given by Michael Faraday. The name of the scientist is Michael Faraday. Write down this important point. G.J. Stoney, J.J. Thomson, and the next one is Michael Faraday. Is it clear to all? Okay, so now we will explain the experiment of Michael Faraday. So in 1830, the name of the year is 1830. In 1830, Michael Faraday takes an important
notifications. The Michael Faraday describes that after passing electricity from electrolyte compounds, chemical reactions will occur. So the first important point is given by Michael Faraday. Just see, in 1830, Michael Faraday describes an important point that after passing electricity from electrolyte compound. So first of all, we have to explain what is electrolyte. So the very simple, electrolytes are such type of compound in which positive and negative ion will occur after ionization. So after ionization, if positive and negative ion will produce, then it is electrolyte. Just see, for example, NaCl is electrolyte because NaCl after addition of water, Na plus and Cl minus will produce. So if positive and negative ion will produce, then it is known as electrolyte compound. So this is electrolyte. So if we pass electricity in electrolyte compound, chemical reactions will occur. Which type of chemical reactions? The chemical reactions are of oxidation and reduction type. I think so you all are aware about the chemical reaction like as oxidation and reduction. Losing of electron is oxidation and gaining of electron is reduction. So Michael Faraday describes this important point that after passing electricity from electrolyte compounds, chemical reactions will occur. So this is the important research which is given by Michael Faraday. So according to this experiment, now we are in 1850. So in 1850, again Michael Faraday used electrical discharge tube. This tube is also known as cathode discharge tube. What is anode and cathode? We know that. Anode, when we pass electricity, at that time anode is positive, and when we pass electricity, remember this important point, anode is positive and cathode is negative. They both are known as electrode. Which word I have explained? Electrode. क्या बोला मैंने? Electrode. कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर माइकल फेराडे ने लिया हुआ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब मीन्स कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब. सो इन मिड 1850s mainly Faraday began to study electric discharge tube, partially evacuated tubes. It's known as cathode discharge tube or cathode ray tube. So this is cathode ray tube. Now we will explain the experiment of cathode ray tube. Just see this red color, ये है cathode ray ट्यूब रेड कलर की, जिसमें वैक्यूम करना है. मींस इसकी जो अंदर की जो एयर है ना, वो पंप के थ्रू बाहर खींच लेनी है. इसका मतलब इसमें क्या हो गया? अभी इसमें वैक्यूम हो गया है. सो वैक्यूम विल क्रिएट इन दिस कैथोड रे ट्यूब और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब. इसमें क्या किया है? वैक्यूम किया है. इज इट क्लियर? ओके. नाउ वी विल एड two important thin plate in it. We are adding two thin plate in it. This thin plates is known as electrode. Thin plate
is known as electrode. So we will add these two important thin plate, this one and this one. This is known as electrode. Left side it is cathode negative charge and here it is positive charge. Why? Just see, इसको हम बैटरी के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं. देखिए यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव है ना जो एंड, इसको कहते हैं कैथोड, और इसका पॉजिटिव एंड यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है उसको कहते हैं एनोड. इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया और यहाँ पर आ गया माइनस. सो यहाँ पर हाई वोल्टेज का पावर हम यहाँ पर पास करने वाले हैं. हाई वोल्टेज प्लस लोअर प्रेशर. High voltage and lower pressure will pass through these two plate. देखिए आप सबको ये एक्सपेरिमेंट अच्छी तरीके से समझना है. अभी मैं इसका नोमेनक्लेचर आपके सामने कर रहा हूँ. ये हमने ले लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, यहाँ पर वैक्यूम पंप है जिसका मतलब इसके अंदर से एयर है वो हमें निकाल देनी है, इसीलिए प्रेशर लो हो जाएगा. यहाँ पर इस दोनों प्लेट को इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं. ये है कैथोड, यहाँ पर है एनोड. इन दोनों प्लेट को मैंने बैटरी के साथ यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है. ये बैटरी के साथ कनेक्शन, ये बैटरी का नेगेटिव रोड, यहाँ पर पॉजिटिव रोड, पॉजिटिव मतलब एनोड, यहाँ पर नेगेटिव मतलब कैथोड. जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तब की बात है. तो देखते हैं हाई वोल्टेज लोअर प्रेशर में इसे यहाँ से पास कर रहे हैं. यहाँ पर दूसरा क्या देखिए, उसको कहते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन और फ्लोरोसेंट कोटिंग. ये कोटिंग किया हुआ है जिंक सल्फाइड का. स्क्रीन रखी हुई यहाँ पर. स्क्रीन का मतलब क्या, यहाँ पर से जो रेस निकलेंगे ना उसका स्पॉट यहाँ पर स्क्रीन पर आने वाला है. इसके लिए यहाँ पर देखा क्या किया हुआ है, जो एनोड की जो प्लेट है ना उसमें होल हो गया है. यहाँ पर ये जो भी दिख रहा है ना आपको थीन, ये होल है. यहाँ पर से रेस इससे पास होके यहाँ पर ये कॉलिजन उनका होने वाला है. कॉलिजन होगा तब यहाँ पर स्पॉट दिखेंगे, इसीलिए ये स्क्रीन यहाँ पर रखी हुई है. उसको कहते हैं फ्लोरोसेंट कोटिंग, फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी उसको कह सकते हैं. ठीक है, तो ये स्क्रीन जो ZNS की बनी हुई है यहाँ पर रखी हुई है. अभी आगे क्या हो रहा है देखते हैं. चलिए अभी जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारा कंटिन्यूअस आगे बढ़ता है. तो द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैस could be observed only at very low pressure and very high voltage. Approximate 10,000 वोल्ट का यहाँ पर जो वोल्टेज है वो पास हो रहा है, greater than 10,000 volt. So the question arising or the answer is here that electric discharge through the gas could be observed only at very low pressure and high voltage. The pressure of different gases could be adjusted by evacuation. इसका जो ये वैक्यूम पंप के थ्रू हम उसका प्रेशर एडजस्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम होना, लोअर प्रेशर रखना ये बहुत ही नेसेसरी है. Just when sufficiently high voltage is applied across the electrodes, current starts flowing through a stream particles from cathode to anode. So now the current starts from cathode to anode. Flow of charge will pass through from cathode to anode. So when we pass high voltage current across these two plates, the rays will produce from cathode to anode. These rays are produced from cathode, so these rays are known as cathode rays. These rays are known as cathode rays. It is very important point. These are the cathode rays or cathode ray particles. The flow of current from cathode to anode was checked by making a hole in the cathode, hole in the anode. So the flow of current will check by this type of small hole in anode. अगर इसमें से जो भी रेस निकलेंगे ये एनोड में होल किए हुए इसमें से बाहर निकलेंगे. यहाँ पर फ्लोरोसेंट कोटिंग रखा हुआ है, वहां पर स्पॉट दिखेंगे. उस स्पॉट के तौर पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ रेस प्रोड्यूस हुए हैं, वो रेस कैथोड में से निकले हैं, इसीलिए उनको कैथोड रेस के नाम से जाना जाता है.
ठीक है, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट हो रहा है देखिए। मैं एक्सपेरिमेंट रिपीट करता हूं। हमने क्या लिया यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें वैक्यूम किया, यहाँ पर दो प्लेट का कनेक्शन किया, एक को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा, दूसरे को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा। जैसे ही हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हुई, यहाँ पर से रेस निकले। ये रेस निकले में कैसे मालूम हुआ, एनोड पर यहाँ पर होल किए हुए हैं, इसमें पीछे फ्लोरोसेंट कोटिंग रखा हुआ, इस पर डिफरेंट स्पॉट दिखने को मिले। जैसे हमें पता चला कि इसमें से कुछ रेस निकले हैं, वो रेस कैथोड में से प्रोड्यूस हुए हैं, इसीलिए इन सबको कैथोड रेस के नाम से जाना जाता है। So these are the cathode rays and the important discovery of electrons. But how it is electron we will explain in this lecture again from after some time. So in 1830, Faraday explained that after passing electricity from electrolyte compound, chemical reaction will occur. So in mid 1850, Faraday takes an important experiments with electrical discharge tube or cathode ray tube. So in electric discharge tube, two thin plates are taken here and these plates are known as electrode. High voltage and lower pressure is necessary. When at a lower pressure and higher voltage current will pass across this plate, at that time the rays will produce from cathode and it will collide with here fluorescent coating when the hole in anode plate. At this type of rays are known as cathode rays. So these are the discovery of cathode rays. So cathode rays start from cathode and move towards to anode. This is the first summary of this experiment. Cathode rays start from cathode to anode. So this is first, and the second important point is here that these cathode rays are not visible. These cathode rays, the second important summary is here that cathode rays are not visible. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बोर्ड पर मैं जो लिख रहा हूँ ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से आप नीट जेडब्ल्यू एमसीक्यू अच्छी तरीके से उस तरीके के सोल्व कर सकेंगे, पर मैं आपको दूसरी पीडीएफ सेंड करूंगा जिसको आपको क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है। ये है हमारे लिए जस्ट कॉन्सेप्ट के तौर पर हम एमसीक्यू अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो ये कैथोड रेज विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं है तो हमें कैसे दिखेंगे, तो ये वर्क कर रहा है ये फ्लोरोसेंट कोटिंग जो जिंक सल्फाइड का बना हुआ है। एनोड में यहाँ पर जिस पर हॉल यहाँ पर पड़े हुए हैं, फ्लोरोसेंट कोटिंग पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पॉट्स दिखेंगे, इसी के तौर पर ये बोला जा सकता है। बट ये फ्लोरोसेंट कोटिंग के लिए उसका वर्क है कि हमें ये रेस दिखे। सो इट इज नॉट विजिबल। पॉइंट नोट डाउन दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो समरी मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये जो कैथोड रेस की जो मोशन है ना वो स्ट्रेट लाइन में होती है। कौन सी होती है? वो स्ट्रेट लाइन में मोशन होती है। सो द मोशन ऑफ रेस इज स्ट्रेट in absence of electric and magnetic field. It is very important point that in absence of electric and magnetic field, the motion of the rays is in a straight line. Straight line का मोशन यहाँ पर तो यहाँ मैंने जो दिखाया वो स्ट्रेट लाइन आपको दिखा है, एक्चुअली वो है नहीं। आपको पता है ना, सन में से जो रेस यहाँ पर आ रहे हैं वो रेस हमको पता है वेवलेंथ उसकी हम करते हैं, फ्रीक्वेंसी हम उसकी मेजरमेंट करते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन के नहीं होते, सभी डायरेक्शन में निकलते हैं, ऐसा उसमें होता है। तो इसके तौर पर हमें ये मालूम पड़ता है, यहाँ पर हम जान सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट करते हैं तभी वो सभी मोशन में, सभी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, उसका चार्ज नेगेटिव है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। कैथोड मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। सो इसीलिए यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये कैथोड रेस है, इट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ इट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड nature of gas.
This is the important summary which we obtain from this experiment. So this is the discovery of electron. We will repeat this important point. In 1830, Michael Faraday explained that when we pass electricity from electrolyte compounds, chemical reaction will occur. Is it clear? In mid 1850, Michael Faraday gives an important results of an experiment which is done by him from electric discharge tube or cathode ray tube. This is vacuum type evacuated cathode ray tube. These are the two thin plates named cathode and anode. These are the electrodes. We will connect these plates with battery, high voltage power greater than 10,000 volt. When the 10,000 volt or higher voltage at lower pressure will pass through across the plate, rays will produce. The rays will produce, this type of rays will produce from cathode. So this is cathode rays. The motion of rays are from cathode to anode, that's why it is cathode rays. But we have to observe these rays due to the hole of this anode plate. These are the holes of plate. When the rays are produced, this is fluorescent coating, or this is prepared from zinc sulfide. The spot will create here. That's why we can easily understand the rays. These are the cathode rays. Cathode rays are not visible, but they are visible with the help of this fluorescent coating. In the absence of electric and magnetic field, the motion of these rays is in a straight line. But in presence of electric and magnetic field, the cathode rays is produced. That's why it is known as electron. And this cathode rays, the rays, is not depends upon the material of electrode, and the nature of gas is not depends upon. Just see, not depends upon material of electrode and the nature of gas. ठीक है? तो ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ पर हुआ है, उसका एक्सपेरिमेंट हमने ऑब्जर्व किया. आई थिंक सो कि आप सबको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला होगा. अगर आपको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इस वीडियो को रिवाइज भी करके आप इंपॉर्टेंट मैटर देख सकते हैं. आप सबको मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा ताकि अच्छी तरीके से ये मैटर आप प्रिपेयर कर सके. सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर.